Hello students, I am Aniket Kirsch. Welcome back. Today we will see what all things we have to study, how to prepare for this, revision assessment, right? So, first of all, what you have to do, you have to read the chapter thoroughly, right? You have to read the chapter thoroughly and point out, mark the keywords. Mark the keywords means you have to understand each and every terminology, right? What is decimal number? What is octal number? What is binary number? What are hexadecimal numbers, right? You have to understand each and everything. What is decimal number? What is binary number system? So you have to see each and every terminology, right? Understood? Now next, what is unity, what is tens, hundreds, place, what is place value, face value, right? You have to see each and everything. You have to see each and every terminology. What are binary numbers? You have to see how to convert decimal into binary, binary to decimal also you have to see, right? And with that, see these facts also, these facts also. Let's know more. All these things are very important, right? What is who is Aryabhat, and this, what are all bases, base क्या होता है, this also you know, right? So you have to see all these things, and binary to decimal also. um, with that, this facts files means how you have to read the chapter, how all things you have to analyze. I am telling you, you have to, when you, once you will, after completion of the chapter, when you will see everything, you should be able to understand by the term that what is the content of that topic. By the term itself you should be able what should be there in that topic, right? Means what is octal number system, what is hexadecimal number system. It's octal number, decimal numbers, octal number system base is what? Base is 8, right? Octal means 8, and 8 digits are there, means they are from 0 to 7, right? And hexadecimal number system, how many digits are there? 16. So base is 16, and the number is from 0 to 15. Digits. So digits are from 0 to 15, right? Computer arithmetic means computer is understands binary language, है ना? That is 0 and 1. How all calculations are done in binary form, that is computer arithmetic. So binary addition, 0 plus 0, you should remember this. 0 plus 0, 0 plus 1, what all, how additions are happened in binary number, right? Then only you will be able to, add these 0 0 1 1 plus 1 0 1 1, right? If you will know how to add in binary form, then only you will be able to add this, right? Yeah, you should know. Understood? Now next, binary subtraction. You should also, read binary subtraction, how subtractions are done in binary form. Multiplication, side by side you have to cover this also, what all facts and figures are given extra, right, related to that topic. And after reading the chapter thoroughly, after doing all these divisions and multiplication operations, means what all things are there, just different kind of number systems, their base, what is place value, face value, and all these things, and then conversions, right, from one number system to another number system, right? After completion of reading, what you have to do, you have to see from this recap of the chapter that whether you have completed all the topics or not. Line by line you have to read this, whether you have completed all these topics. And after this, come to the exercise, come to the exercise and see fill in the blanks, right? In fill in the blanks, what all things you have to see? The base, the first, like one by one you have to see the fill in the blanks. And in that too, what you have to do, in that too, what you have to do, wait, when you come to the fill in the blanks, the first one is the base of the binary number system is, the question is the base of the binary number system is. So you know what is the base of the binary number? Yes, it's 2, right? But
if you are reading this question, the base of the binary number is 2, then other questions should related to this should strike on your mind, right? The base of the binary number is 2. Then what is the base of the decimal number system? What is the base of the other number systems, right? So what is the base of the decimal number system? The base of the decimal number system is 10. Why 10 digits are there? What is the base of the hexadecimal number system? 16. Hexa means 16. What is the base of the octal number system? 8. Right? So this kind of questions should also strike on your mind, right? The base of second question is the base of dash system is 10. Obviously, base of decimal number system is 10. Octal number system consists of 8 digits. Yes, octal means 8. 8 digits are there. Base and number of digits are same, right? But that digits should be 0. That digit should be starting from 0. That's why the range is 1 less than that of the actual digit. If number of digits are 8, then that digits will be 0 to 7, because counting from 0 it will up to 7, right? In binary addition, now 1 plus 1, if you are reading this question, 1 plus 1 equals to 0 or 1, whatever, in binary form, you have to analyze other things also. 1 plus 1 is what? In binary form, it's a 10, right? It's a 10. In binary form, addition of 1 plus 1 is 10. So what is 1 minus 1? What is 1 minus 1 in binary? 1 minus 1 is 0, right? And what is 1 into 1 in binary? 1 into 1 is what? 1 into 1 is 1. Okay, like this, every other questions related to it should strike on your mind. Then you are a good learner, right? Dash uses 16 symbols to represent numbers. Hexadecimal, right? Dash number system is understood by the computer. Computer क्या समझता है अभी? Only one thing, binary. Binary language बोलो या binary digit बोलो या binary code बोलो, whatever. Computer understands binary language, right? In binary subtraction देखिए ये question again it is repeating. 1 minus 1 equals what? 0. Getting understood, beta? Now next. True or false? True or false? How to read true and false? Suppose the decimal number system consists of 10 digits, that is 0 to 9. क्या decimal number system में 10 digits होते हैं 0 to 9? Yes, it is true, right? It is true. But other question should strike on your mind कि decimal number में 10 digits होते हैं 0 to 9. तो फिर binary number system में कितने digits होते हैं? 2 digits, that is 0 and 1. And in octal number system, 8 digits, that is 0 to 7. And in hexadecimal number system, 16 digit, that is 0 to 15. No, 0 to F, right? F. After 9, we consider A, B, C, D, E, F, right? The method to perform division of two binary numbers is not same as that of the decimal numbers. Binary और division ये डेसिमल नंबर में डिवीजन सेम टाइप से नहीं होता. फॉल्स. दोनों सेम जैसा ही होता है. दे बोथ आर up to the same. Their concept of dividing is same, right? 1 multiplied by 0 equals to 0. Is it true? 1 multiplied by 0 equal to 0. क्या ये सही है? Yes, it is true. 1 multiply. अब 1 multiplied by 0 equal to 0 है, तो you should, the other question which should strike on your mind is 1 into 1. What will be 1 into 1? Right? What is 0 into 0? Such kind of question, should strike on your mind, right? Getting? Now next, Charles Babbage introduced the concept of zero. Charles Babbage introduced the concept of zero. नहीं, it is false. Aryabhatta introduced the concept of zero, right? तो Charles Babbage कौन था? Charles Babbage कौन था? ये भी आपको, you should know this also. Charles Babbage is the father of computer, right? The number used in octal number system are 1 to 7. 1 to 7, you have to notice it sharply, right? 1 to 7, here 1 to 7 is given, but it is 0 to 7, right? 0 to 7. Getting?
This all you have to read the questions sharply. Getting the number used in octal number system, so you have to read the question carefully. Sometimes there are cannot be changed, so only because of one term true can become false, false can become true. So don't remember or memorize this exercise questions. It can be, it gets change according to the situation, according to the terminologies. कभी कभार टीचर ट्विस्ट कर देता है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके वो एग्जाम में दे देता है, तो उससे क्या होता है, यू नो आप एक्सरसाइज पढ़ के आएंगे डायरेक्टली और आप क्वेश्चन को फोकस नहीं करेंगे, तो यू विल व्हाट, आपको लगेगा कि अरे इसका तो ट्रू था, इसका तो फॉल्स था, या फिर इसका आंसर यही था. बट दे यू हैव टू सी शार्पली द क्वेश्चंस, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस, व्हाट इज एग्जैक्टली आस्किंग, राइट? Getting? So, next, application-based questions, right? Ratika's computer teacher asked her to convert the octal number to decimal number. Octal to decimal. Octal to decimal means, octal means जिसका base 8 हो, and octal to decimal means जिसका base 10 हो, right? So Ritika's computer teacher asked her to convert the octal number to decimal number. Suggest her to the method which she should apply in converting the octal number. तो octal to decimal करने के लिए क्या करेंगे आप? What you will do? Octal to decimal. तो आपको बस इतना याद रखना है, जब आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यू हैव टू रिमेंबर, यस. डेसिमल से आप जब बाइनरी नंबर पे चेंज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं. यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके जो कैरीज आते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, राइट? दिस इज द पैटर्न, ये आपको याद रखना है ये. और इसका उल्टा भी याद रखना है, अपोजिट ऑफ डैट. अगर कोई नंबर को आप बाइनरी नंबर सिस्टम से आप डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें जो भी डिजिट है 0 1 1 जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसमें आप क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. उसमें डिवाइड किया करते थे डेसिमल टू बाइनरी में, और बाइनरी टू डेसिमल में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यूनिट डिजिट पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 0, फिर 1 पे 1 प्लेस पे जो है उस पर 2 टू द पावर 1, और फिर इसके बाद वाला 10 प्लेस पे 2 टू द पावर 2. फिर वैसा करते करते आप जाएंगे, एंड व्हाट, इसके जो आंसर्स आएंगे, वॉट एवर इसके जो आंसर्स आएंगे उन सबको यू हैव टू एड इट, राइट? एंड यू विल गेट दी ऑप्शंस. अंडरस्टूड? यही पैटर्न होता है. तो मैंने व्हाट आई सेड कि डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आता है आपको. सो हियर व्हाट इज आस्किंग, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर. तो आप ये बताइए कि आप, ये तो डेसिमल तो कॉमन हो गया, ठीक है. अगर आप बाइनरी, ऑक्टल की जगह बाइनरी कंसिडर कर लीजिए और यहाँ पे डेसिमल ले लीजिए, तो ऑक्टल से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है. तो आप पहले देखिए कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था. वॉट एवर नंबर इज देयर, वॉट एवर नंबर इज देयर, जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर है, वन जितने भी डिजिट्स का नंबर है, जो यूनिट डिजिट था आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 करते थे इन केस ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. तो आप ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में व्हाट यू विल डू, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 लाइक दिस यू यूज टू राइट, राइट? एंड इन केस ऑफ octal to decimal, 8 to the power 0, 8 to the power 1, and in case of hexadecimal, 16 to the power 0, 16 to the power 1, hexadecimal to decimal, right? So this is the pattern. Understood? Now next, so what all questions, if you are converting from this to this, everything should strike on your mind. How to convert decimal to binary, how to convert decimal to hexadecimal, decimal to octal, then again reverse of all this, getting binary to decimal, hexadecimal to decimal, everything, every conversion you should know in this, between these 4 types, right? Binary, octal, decimal, hexadecimal. You should be able to convert from one form to another form. Understood?
Now, the teacher has given an assignment to Saurabh on binary subtraction. Saurabh is confused how to subtract 1 from 0. How to subtract 1 from 0. 0 से 1 को कैसे माइनस करेंगे, सौरभ कंफ्यूज हो रहा है. तो कैसे करेंगे? तो 0 से 1 तो तभी माइनस होगा ना जब यहाँ पे कोई भी दूसरे नंबर का आप ये कैंसिल करके इसका कैरी फॉरवर्ड लाओगे, फिर ही ये माइनस हो सकता है. गेटिंग? सो यू हैव टू टेक कैरी फॉर दिस. अंडरस्टूड? सो ये क्या है, दिस ऑल आर कैलकुलेशंस, राइट? यू शुड बी means it is totally depend upon the practices. Getting? You have to practice a lot for this. Now next, multiple choice questions. How to read multiple choice questions? uh, First question is, dash introduce the concept of zero. Yes, the answer is Aryabhat. You know the answer is Aryabhat. लेकिन who is Ada Lovelace? You have to read this also. कि भाई अदर ऑप्शंस, ये तो ठीक है, दिस इज द आंसर, बट रीड अबाउट दिस अदर ऑप्शंस ऑल्सो. ये ऑप्शंस क्यों दिया है, ये कौन थे, राइट? यू हैव टू रीड दिस ऑप्शंस ऑल्सो. अंडरस्टूड? In the same way, the a dash computer converts the decimal format in its binary equivalent. A dash converts the decimal format into its binary equivalent. Digital computer, cell phone, abacus. Obviously, digital computer तो cell phone क्या है पता है. abacus क्या है? You should, अगर if you don't know, see the book. It is given in the chapter. और chapter में भी नहीं है तो it is better to search it on Google, right? अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के गूगल में सर्च करते हैं एंड एवरी टर्मिनोलॉजी यू विल यू नो इफ यू नो अंडरस्टैंड्स देन इट विल बी गुड फॉर यू, for your exam purpose also, and for your future also. ठीक है ना? You will gain a lot. A computer understands only dash code. ये तो पता है बाइनरी, और फ्रेंच इंग्लिश भी पता है आपको क्या होता है. इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 equals to 1, right? 1 into in binary multiplication 1 into 1 is equal cannot be equal to 2. Why? क्योंकि 2 तो बाइनरी नंबर है ही नहीं ना, बाइनरी डिजिट है ही नहीं, तो ये कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो ये तो वैसे डिलीट हो गया है ना. और 1 into 1 is 1, राइट? 0 तो हो नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन में 1 into 1. टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डिवाइड द नंबर बाय. ये तो मैंने बताया था आपको, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. टू डिवाइड द नंबर बाय 2, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है. अगर ऑक्टल लिखा होता है इसकी जगह तो यू हैव टू टिक ऑन इट, और अगर डेसिमल लिखा हो, डेसिमल तो ऑलरेडी गिवन है, तो 10 to post. ओके देन, अंडरस्टूड? So, next, come to the question and answer. You can see the first question is, explain number system and its commonly used types. Explain number system, and number system क्या होता है? Number system, you can write the answers in your own word also, but if you see from the book, in earlier days there were no means of counting. People used to count with the help of fingers, stones, sticks. This method was not adequate to overcome the limitation. Number system was originated commonly used. तो ये तो आपको पता है, commonly used number systems are decimal, binary, octal and hexadecimal, right? So in the earlier times what happens, counting was not so easy. There was a confusion between the counting, so there were different ideas how to count. Some uses fingers, some uses stones. There are different ways to count. Yes, so it was not adequate, it was not sufficient to count. So that's why in later on what happens, different kinds of number system was invented to overcome these limitations. Understood? Okay, so you have to read it once and remember it, right? So what is it, what happened earlier times, how we have to how these inventions came out, right? थोड़ा सा what we have to do after reading every answers, wait for the 30 seconds and try to analyze that answer, right? तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. Now, next question. Okay, only 4 questions are given in this chapter, right?
What are the rules to convert a decimal number into binary number? What are the rules to convert a decimal number into binary number? पता है, we have to divide it by 2, right? We have to divide it by 2. Rules to convert the decimal number into binary number. Suppose you don't know the, अगर आपको इसको रटना नहीं है, आपको पता है कि डिवाइड करना है, यस, तो इसीलिए डिवाइड द गिवन नंबर डेसिमल नंबर विद द बेस 2, राइट? Write down the remainder and divide the quotient again by 2. Repeat this step 2 till the quotient. Getting? और क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है. यू ऑलरेडी नो, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा. दैट आंसर विल बी ग्रेट. ठीक है, आपको जैसा आप वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, यू नो द टेक्निक, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये अपने को इतना सारा ये वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस याद नहीं रखना है हमको. गेटिंग? नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? Write the rules to multiply two numbers. Again rules. Write the rules to multiply two binary numbers. In decimal number system, when number is multiplied by 0, it becomes 0. Similarly, in binary number system, when you multiply any number with 0, it becomes 0. ठीक है, ये तो ठीक है. अगर आप अपने से और ऐड करना चाहते हैं तो इन बाइनरी 1 into 1 is what? ये 1 ही होता है. 0 into 0 means what? ये 0 ही रहेगा. और 0 into 1 means what? 0 ही रहेगा. गेटिंग? तो ये 3 फॉर्म्स ही रहेंगे ना, ये 3 फॉर्म्स ही रहेंगे. दिस इज द टेक्निक, दिस इज द वे हाउ मल्टीप्लिकेशंस आर डन इन बाइनरी फॉर्म. अंडरस्टूड? और क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? Write the rules to multiply two binary numbers. Two binary numbers. So we have to multiply with 0 or 1, and if we will multiply it by 0, the 1 will become what? 1 or 0? 0, right? 0 multiplied by 1 is 0. 1 multiplied by 1 is 1. So like this you have to mention, right? In your language, in your, words. That will be better. इसको रटना मत. अगर I feel exactly this as a teacher, I told you the answer. I have showed you the answer. But this all according to your knowledge, according to whatever you understood, on the basis of that you have to frame the answers, right? That will be more convenient. और आपको कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है. Briefly explain the octal number system. तो किसी नंबर सिस्टम के बारे में what all things we know? नंबर सिस्टम का बेस हमें पता है, उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो हमें पता है. गेटिंग? बेस पता है. बेस इज व्हाट? नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट? एंड दैट नंबर ऑफ डिजिट्स आर फ्रॉम वेयर टू वेयर, राइट? ऑल दिस थिंग्स you know about the number system. So the octal number system consists of 8 digits, that is 0 to 7. दोनों पता है. और जब ये आप ये आंसर पढ़ रहे हैं तो इट शुड ऑल्सो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये होते हैं 8 डिजिट 0 to 7. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? 2 डिजिट्स 1 and 2, 1 to 2, राइट? 1 and 2, सॉरी 1 and 2 नहीं, 0 और 1. गेटिंग? एंड in that is decimal number system, 10 digits are there, 0 to 9, and in hexadecimal 16 digits are there, that is from 0 to f, right? All these things you should prepare with this answer. The procedure of octal to decimal conversion is similar to the binary. ऐसे आप लिख सकते हैं. ठीक है? वैसे the main point is this only, from here to here, right? So what I am trying to say कि अगर आप कोई भी आंसर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू मास्टर ओवर इट. गेटिंग? और ये कन्वर्जन्स का तो एज मच पॉसिबल जितना ज़्यादा रिविजन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा करिए. एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. अगर आपने किसी 68 का आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया है तो अपने से कोई 46 नंबर ले लीजिए, फिर 36 नंबर ले लीजिए. लाइक दिस यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? और जब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं, 1011 दिया हुआ है इन योर बुक, आपने कोई डिफरेंट नंबर ले लिया, 00112, सॉरी 00110, ऐसे कोई भी नंबर, डिफरेंट बाइनरी नंबर्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. गेटिंग? and you will automatically, once you you will know how to convert, you will automatically know, right? Or perform binary addition on the following,
आपने एक किया, दो किया, फिर अपने से नंबर्स ऐड करके कोशिश करिए, देखिए सी वेदर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और नॉट। जब तक करेंगे नहीं यू विल नॉट नो वेयर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। गेटिंग? Find the difference be. So all this calculation, binary operations, as practice as much as possible, जितने आपने से numbers लिखिए, operations करिए, calculations करिए, you will have master over it. Okay. और मेन डिफरेंसेस याद रखिएगा किसमें क्या करना है, ठीक है, किस कन्वर्जन फ्रॉम विच फॉर्म टू विच फॉर्म एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू अप्लाई, राइट? गेटिंग? सो आई होप कि आपको यू हैव नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, नॉट ओनली दिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर योर हाफ ईयरली, एनुअल और बोर्ड एग्जाम है, फॉर एनी एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस ओनली। गेटिंग? दिस इज द एग्जैक्ट वे, exact pattern to read, right, to prepare for an exam. So that's it for today. Thank you. Have a nice day.